Hi, in this video our essay topic is related to environmental damage and our essay prompt is the responsibility to prevent global environmental damage is on politicians rather than individuals. Do you agree or disagree? So I have underlined some important words like responsibility. For responsibility, you can write sole responsibility while paraphrasing in your introduction, and you can also write duty and burden. The extent of the damage to the environment has become an international issue and needs to be tackled soon and effectively. Some people consider it as the sole responsibility of the government, or some people consider it as the duty of the government to take steps towards solving this pressing issue. And next word is global. For global, you can write globalization in your essay, or internationalization. To add to it, internationalization and advancement in technology, or you can say worldwide development. These are synonyms for this word globalization. So internationalization, worldwide development, global proliferation, global growth, worldwide integration, and worldwide proliferation. In the question, in the essay prompt, there's a word global. और जो वर्ड ऐसे प्रॉम्प्ट में आया वो तो आपको यूज़ करना ही पड़ता है इन योर इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन. सो यूज़ वैरायटी ऑफ वर्ड्स, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. इन वर्ड्स को पढ़ के अगर आपको इससे रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए तो आपका माइंड में फ़ौरन क्लिक करेगा वर्ड, एंड जो फर्स्ट क्लिक करे और फॉर्मल हो वो अपने ऐसे में यूज़ कर लें. एंड यू कैन ऑल्सो राइट ग्लोबली. In the essay prompt it was global. You can also write globally, worldwide, internationally, universally. To sum up, I reiterate that even though the problem of environmental damage has escalated to a level that needs to be handled globally, or that needs to be handled internationally, or that needs to be handled universally. So this is how you can show the examiner that you have a range of vocabulary. Okay, so next word is environmental damage. In introduction, we are writing cleaner environment. This is a collocation for environment. Cleaner environment or deteriorating condition of the environment. Instead of using damage, we are writing deteriorating condition of the environment and problem of environmental damage. Environmental damage or problem of environmental damage. We just have added this word, problem of. And next word is politicians. For politicians, you can write governments. These are synonyms you can say here. Politicians, governments, policy makers, legislator, lawmaker. पॉलिटिशियंस ही पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना. पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर, लॉ मेकर्स. एंड स्टेट लेवल. फॉर स्टेट लेवल यू कैन राइट गवर्नमेंट लेवल, country level, national level. Country level, national level, or government level. So these are synonyms and topic related vocabulary words for this essay. Just learn them, and by using these words write your own essay in your own words. क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं होंगे, जो ऐसे प्रॉब्लम में वर्ड्स यूज हुए हैं उनसे रिलेटेड सिनोनिम्स नहीं होंगे, देन यू वुड नॉट बी एबल टू राइट अ गुड ऐसे. अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, आपका ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल, एक दो आपने एग्जाम्पल भी देनी होती हैं, और बस इन वर्ड्स को रीड करके राइट योर ओन ऐसे. और whether you agree or disagree, it's up to you. अगर आप एग्री करते हैं तो अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उससे रिलेटेड ही दें, डिविएट ना करें टॉपिक से. अगर आप एग्री करते हैं तो एग्री ही करें, डिसएग्री करते हैं तो उसी को लेकर चलें. ये नहीं कि आप न्यूट्रल स्टेटमेंट देने, क्योंकि इसमें आपने या एग्री करना है या डिसएग्री करना है.
एक ही तरफ रहना है. And arrange your body paragraphs accordingly. Okay, so this is all for this essay. That's all for this essay. And if you have any question, you can ask me in comments.